Thank you, ladies and gentlemen, for joining another episode of Owais Barlas, a podcast. You're watching the Founder Series. आज मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त और डॉक्टर भी हैं, PhD डॉक्टर हैं. He's spearheading the AI revolution in Pakistan, and he's doing a lot of things in Pakistan specific to AI, news, and many other things. Basit Riaz Sheikh. How are you doing, Basit? I'm doing well. Thank you for आपका having इंट्रो me. मैंने सही कराया? बिल्कुल perfect. बल्कि ज़्यादा कुछ अच्छा कह दिया. So generally I suck at these introductions. One thing that I often get asked is like, जहाँ पे भी जाऊँ, because I like to say कि Dr. Basit है, like पहला सवाल होता है तो यार घुटने में दर्द हो रही, कंधे में दर्द हो रही है तो क्या कर सकते हैं? तो but then I have to explain it to them कि I'm not body का doctor. Any doctor on the plane? No, उसमें मैं हाथ रेस नहीं करता because that's like getting people into trouble. But yeah, अगर जहाज में कभी कोई AI की चीज़ हो तो of course I'll be happy to help. Yeah, I think we've known each other a long time, yes. And two things that we've always connected on is tech and family. Of course. And the third that we've never connected on is politics. Yes. And we're not going to discuss it at all. Yeah. And in fact, like, one thing I like to share is that, we have another friend, this common group of 3 friends. Yeah. और उनके साथ मेरा connection politics से होता है. साथ के साथ. और usually whenever the 3 of us are together, तो वैस का हमेशा से point होता है कि I don't waste your time. Yeah. And I think he is won over me in that aspect के I've realized that a lot of that stuff that we discuss is actually a waste of time and it's negative energy. Yeah. And probably this is also some message that I would like to share with, the youngsters who are coming of age and all. Of course, we have very strong political views, aspirations, positions. That's fine. And everyone should have it. I'm not against that thing. But I think that should not be dominating the part of your day. Well, it should be there. There are many constructive things. And the reason I say that, and I've personally experienced it, if you take that negative energy, because unfortunately in Pakistan, the politics is a lot of negativity, right? Yes. And it can consume a lot of energy. Yeah. We work with a very fixed sort of energy, and you don't want to do that thing. Yeah. Keep that part separate, be vocal, whatever you want to do, but be the constructive part of your growth journey. That should be separate, and you'll see a big difference. It's funny you say that because I don't know if I've shared this story with you, but एक बार ये मेरे साथ हम लोग इस्लामिक क्लब में अपना वॉक कर रहे थे और हमारे पीछे जो है वो एक बड़े जर्नलिस्ट थे. Yeah, we were together there. हाँ. बस The वो एक के बच्चे थे दो. Yeah. वो भी कहते इमरान खान साहब Yeah. यार ये क्या हो गया? Yeah, कि absolutely. हम लोग ओ लेवल से हमें तो पता ही नहीं होता भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है क्या चल रहा है. We would be so engrossed या तो गेम्स खेल रहे हैं या फिर अपना कोई हम लोग काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर में लगे हुए हैं. But तब तो क्रिकेट की डिस्कशन हो रही होती थी ना या फीफा गेम्स आपस में हम कर रहे हैं या आपके इंटर कॉलेजिएट जो मैचेस हो रहे हैं आप उसकी बात कर रहे हैं and of course you'll be talking about if you are coming of age you're talking about girls, right? But that I was shocked at those kids while doing cycling was discussing कि यार कल उसको जमानत मिलेगी कि नहीं. It's kind of depressing to be honest. While we're on that topic, tell me about your early years. Okay, where did you start off from? Where did you born and raised? Yeah, so I'm originally from Lahore, and in fact, probably an exceptional Lahoriya जो कि इस्लामाबाद को बहुत पसंद करते हैं. When I tell my friends के I love Islamabad, they actually make fun of me. I grew up in Lahore, born and bred in Lahore, went to Aitchison College, one of the best 12, 13 years of my life. Were spent in Aitchison from class 1 till A-levels. बहुत lifelong friendships बनाई. And Aitchison is a great institution. Yeah. Of course, every institution has some strength. It has a lot more strength than the weaknesses. But the bonds and the friendships that you make are phenomenal. Yeah. And then थोड़ी बहुत leadership skills उन्होंने inculcate की. I went on to become the head of Aitchison College, which I still regard one of my greatest honors in life, though I went on to do my PhD from as prestigious a university as Cornell University. उसके बाद I went on a freshman year presidential scholarship to NUS. Very few people know about it. Singapore, yeah. It was never on plan. A lot of things in my life has kind of happened very haphazardly. But I went there, Singapore, the university, the people, some of the smartest people in the world I met there. But the city was not for me. The weather-wise, culturally, I just thought that I was a misfit. So within 2 to 3 weeks of that, though my entire undergrad education was fully covered, like, you used to pay extra money and all, no loans, just 100% scholarship. And as one of the very few, I think 10 people from the entire world who were part of that. But वहाँ पर गए तो मैंने apply कर दिया. मैंने कहा, I need to be where the action is. The action in tech was always in the US for me, right? And I think
वो टेक के इंटरेस्ट की बात ना, आई एम ऑलवेज बीन अ टेकी एट हार्ट शुरू से लेकर. एंड आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माई पेरेंट्स, स्पेशली टू माई मदर, बिकॉज she got asked, like my younger brother Hasham, who's only a year apart from me, and I think he's going to be on your podcast soon as well, was that, like, she got us a Mega 500 computer when we were only 6-7 years of age, right? Wow. And this is a very different time. This is a time where PC has not taken off, or it's not like अभी तो लोगों को कहना कि कंप्यूटर है और iPad है तो वो कहते हैं what's a big deal, ये तो सारों के पास है. भाई उस जमाने में maybe only 1 in 10 houses had something, or maybe 1 in 100 houses had a computer, right? So it was naturally a head start for you कि आपके पास कंप्यूटर है. हमारा क्या इंटरेस्ट था उस वक्त? तो कोडिंग का इंटरेस्ट नहीं था, गेम्स का था. बट वी बिकेम कंप्यूटर literates, right? कि यार इस पे फ्लॉपी डिस्क होती थी, द सेव बटन आइकन, जो कि आती थी गेम, और पैराशूट शूटर, डूम आती थी, क्रिकेट. एंड आई रिमेंबर माय 7th birthday, I had all my friends over. I still have 7th or 8th birthday, still have pictures. My mom was showing me those pictures. Everyone is gathered around that computer and playing this cricket game and all. So got excited into this thing, and आहिस्ता आहिस्ता वो अर्ली स्टार्ट का हुआ कि पता है कि यार कोई चीज़ कंप्यूटर्स की है. तो जब भी कभी पेरेंट्स बाहर लेकर गए या कभी मिला तो हमारा इंटरेस्ट ये होता था टॉयज़ में कि यार हमें कोई टॉयज़ नहीं चाहिए, हमें इनकी गेम्स चाहिए, ये इसकी चीज़ चाहिए. Fast forward to the 90s, before my O levels, right, I got into computer science as a subject. मैंने उधर लिया, ठीक है, as early as class 9. O levels, O1, class 9 आपका बनता है, right? And वहाँ पर फिर my first experience with coding started, right? It was 𝐄𝐤𝐢𝐵ASIC, जिसके ऊपर हमने स्टार्ट की, कंसोल के ऊपर आप करते थे, and I liked it. The best part was that it's like you can tell the computer to do something. Assembly language में भी coding की, समझा कि चलता क्या है. More than anything, it fascinated me. I was like, this is something very powerful. You can make, by giving simple instruction, you can make it do something really nice, right? You can create an application. And on my own, during those age, हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, लोगों को फ़ोन नंबर्स याद करने पड़ते थे. सो मैं एक बड़ा क्रेडिट लेता था यार, मुझे ना फैमिली के और पापा के दोस्तों के सारों के नंबर याद है. इनफैक्ट वन ऑफ आवर फैमिली फ्रेंड्स वुड टेस्ट अस कि यार 20 का नंबर बताओ. तो आई हैड अ वेरी गुड मेमोरी, राइट? बट देन during that summer when he was testing me once on those things, I was like, why do I need to memorize these things when I can create an application? So I created an application for my father who was visiting the UK कि यार उनकी पूरी phone directory मैंने automate कर दी थी. That this is class 9 and 10 की बात, right? And मैंने फिर उससे printouts निकाले और उसमें पूरा tool था कि how do you add a number, how do you subtract a number, all that stuff. So that became like इस तरह करते हैं. So I think. Do you still have that code with you? No. I think a long time back I probably lost, but I wish I had that thing. It would have been great to show it to my daughter as absolutely, because, and I'll tell you the stories that now I'm trying to inculcate the same kind of interest in her, but more on that later. So I need to fast forward to my life journey because अभी तक हम class 8, 9 में फंसे हुए. But वहाँ से ना एक बहुत understanding होगी. Courses वही थे. Again, I was engineering focused, math, physics, all those subjects really happened quickly for me, well for me. So करते करते A levels में भी computer science थी, उसमें फिर projects, बड़े बड़े projects आपको ना deliver करने पड़ते हैं. O levels में भी A levels में. So उसमें एक cricket application बनाई. Cricket, as Pakistanis हमारा cricket में interest होता है कि यार कोई rating systems and stuff like that, cricket scores maintain करने के लिए अप्लाई किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर. उसके बाद NUS के बाद went on to one of the great engineering universities of the world, UT Austin. You are familiar with that. You've been there, you've studied there. So UT का computer engineering program was phenomenal. It's top 10 in the nation, in the US, worldwide. वहाँ पर जाकर ना realize हुआ कि यार this is remarkable, right? I got more interested on the hardware side because just like we came across how the chip design is happening, right? Pakistan mein to nobody talks about chip design. At least those days nobody knew, right? So it's like, okay, yaar, Intel ki chip ye choti si device hai, itni si device hai, and everything that we do is happening within that device. Imagine how immensely powerful it is. So my goal is like keep taking courses until I fully understand how does this work and can I make something of my own there. So your engineering was in software engineering? Computer engineering. So computer engineering is
kind of a mix of electrical engineering and computer science, right? So it's like a 50-50 of that, which is a great thing. इसका मतलब कोडिंग वगैरह भी है बीच में और साथ में coding तो even like I tell everyone there, like, you know, people who design hardware, they design it using some language, right? So coding, some aspect of coding is there, will always be there. So even if you're designing a computer, even some of my friends who are in mechanical engineering, in chemical engineering, all of them have to code. So code, whether in one language or the other, so you will have to do it. फायदा ये हुआ कि इस डिग्री का कि you get a flavor of both worlds, right? आपको under the hood पता है, you know, जिस तरह आप कहते हैं ना कि गाड़ी के अच्छा ड्राइवर सिर्फ वो नहीं होता जो गाड़ी चलाता है, बल्कि वो भी होता है जिसको पता है कि उसके बोनेट के अंदर नीचे क्या चीज़ पड़ी है. तो if you understand how the underlying chip is, ठीक है, then you can code better, then you know your limitations, and then you can even empower yourselves to do better than others. And this is the part I'm gonna explain, you know, some valuable lessons in the age of AI, that why those are valuable. So went on to मेरा उधर plan यही था कि, you know, मैंने कभी PhD और masters का नहीं सोचा था, right? जिस तरह मैंने कहा ना कि a lot of my decisions have been very haphazard, at least till very few years back. One of the summers I was वहाँ पे एक नाइट प्रॉक्टर की जॉब मैं कर रहा था. उसमें ये होता था आप लैब में बैठे हुए रात के वक्त, and it paid really well on top of the scholarship I had, and you know, you get an extra money there. So और उसमें काम क्या होता था, रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक अपने लैब में बैठ के अगर किसी के कोई सवाल है तो आपने उनको आंसर करना है. टू बी ऑनेस्ट, रात को 11 से 7 बजे तक उधर जो बंदे बैठे होते थे वो आपसे बड़े जीनियसेस होते थे, ठीक है, जो मास्टर्स PhD वाले, उन्होंने कभी आपसे हेल्प नहीं की थी. तो ज्यादा से ज्यादा होता था आपकी नेटवर्किंग होती थी. That one job was an eye opener for me. I started networking with the grad students who became my friends, and then some of the top professors there, Professor Brian Evans and Professor 𝐒𝐤𝐤𝐿, you know, godfathers of the computer engineering or networks. I befriended them there because they would stop by on the way out and they'll say like, oh, what are you doing? I was a good student, right? You know, acing my subjects and all. So he's like, you know, what are your plans? This is my junior year, third year, right? So this is the time you start applying for grad school if you want to do. This is somewhere in the middle of November and December. Grad school applications are just a few weeks away, and they're like, why haven't you applied to grad school? Somebody like you should be in grad school. Like, I have not even thought about masters and PhD, and I thought like even the boring people only went for that, right? But they made me, they said we'll write you stellar recommendations, and just do that. Unfortunately for me, unfortunately only 2 or 3 universities were left by the time I thought कि I'm going to do apply. GRE भी फौरन घंटे में जाकर दिया, तैयारी शायरी कुछ भी नहीं थी. But it happened, and I got into Cornell University. Wow. And they flew us in, you know, did a whole presentation. उधर universities में जब आपका admission हो जाए ना grad school में, तो वो आपको इसी तरह pamper करते हैं. They want the best talent, right? So 2-3 universities के visits हुए. Cornell was where my heart and mind was. I really liked it. The faculty was really good. So that's where my grad school journey started. Again in computer engineering. और करते करते उधर 5-6 साल गुजारे. Probably some of the finest, you know, the best years of my life were spent there. Made some of the best friends of my life there. Met some of the smartest people, and kind of became the person that I am today. Uski jo main kehta hu na, jo seed thi, that was laid in, you know, during Cornell days. And बहुत fun भी किया. It's not like it was only lab days, right? I had a lot of fun, and I did a lot of work as well. It resulted in 3 published patents. I have 3 published US patents, and 1 published Chinese patent, not just applied, published. 5 papers, including 1 Best Paper Award, and and hundreds of references to those papers. So that so PhD was shortlisted for the Best Thesis Award too. Couldn't win it, but almost was in the top category. So वहाँ पे बीच में, while I was there, I also worked right in the US. Briefly, Austin days में I worked at National Instruments. National Instruments, you know, was pretty big. They're board level company, because see, unless you are applying that stuff, there practically doesn't happen. Applied materials में as a software engineer काम किया. And I used to make those calculators as well, right?
No, that was TI. That was Texas Instruments. और उसके बाद फिर Intel के अंदर मैंने हार्डकोर रिसर्च की 4-5 महीने उधर था, publish a paper कि how do you make these processors better and all. But my thesis were essentially and very relevant in today's age was that it was like how do you optimize these floating point, in simple terms, matrix multiplication adds on a computer chip for different software applications. So you have 10 or 20. I have no idea what that meant. Okay. In a very in a simple way, let's say you run ChatGPT, right? Sorry. ChatGPT or any large language model, when you kind of go at a very, very threadbare level, right? At a level where there are, let's say the code level, and even beneath the code level, those instructions translate into certain calculations. Right. If you know what is a large language model, all it is doing is it's predicting what is the next token. So what do I mean by that? आप जब ChatGPT से कोई चीज़ पूछते हो, वो कैसे जनरेट करता है? वो सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि अगला जो वर्ड है, सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड क्या होगा, वो आपको आउटपुट कर देता है. ये जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन हो रही है in a large universe, it's all based on math. And what is that math? At the heart of it, it's matrix multiplication and add. So all these large language models or all this computer vision, natural language processing, AI underlying is what your linear algebra is, which we don't kind of relate. That's very interesting that you put it like that, it's so it kind of मेरे लिए तो काफी eye opening इसलिए भी है because now I can connect a few dots. We've had this discussion before, but now I can actually connect these dots. Why is cloud necessary for AI? Why is big data necessary for this? Yeah, absolutely. Why are the predictive or prescription जो वाले models जिसमें पहले काम करते थे, why are they relevant? Very interesting. So everything kind of boils down to this matrix to multiplication and additions, and a lot of data that you put through this system, which is just calculating matrix multiplication and adds. So my thesis focus around that, and that's where my 2 or 3 patents are there. Never know, कभी किसी दिन शायद OpenAI उसको acquire कर ले patents को. But it's just remarkable how you learn certain patterns and then you're able to optimize it. And that's what I was able to do. And PhD हो गई. PhD के बाद my life took a very different turn, right? And now I'm going to fast track to some of the very different, perhaps challenging times of my life. So ideally तो मुझे जो मेरा profile था, I had offers from Google. Then before my graduation and Intel to join them in the Valley as a position of the the joining research scientists, good starting pay and packages. You already know how they track talent and all. But I'd been away from Pakistan for almost 10-11 years by now, right? So एक चीज़ थी कि आप घर को भी मिस करते हो, फैमिली को भी मिस करते हो, and I realized that this is the time, my parents are still young, I want to spend some time with them. My brother Hasham, who was there as an investment banker, he had also moved back, and family was very well entrenched in the political system. We had an opportunity beckoned for me to come and serve as the advisor on IT and telecom and all, and I fell for the power trap. In hindsight, I questioned that, but let's say, I came back. Within a few months, the government of Pakistan then was working on 3G, 4G telecom auction, and I was asked to help facilitate that. So this 3G, 4G telecom auction का जो आज हम beneficiary हैं, उसकी जो foundational document है, I was this is 2012. 11, 12. Sorry, actually 11, 12. 11 का end and 12 का start. So जो foundational document planning, of course, जो बाद में वो अगली गवर्नमेंट में जाकर वो सारा कुछ हुआ था, बट जो पीटीए के साथ इनिशियल मीटिंग्स एंड ऑल एंड सारा कुछ, आई वाज पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड एडवाइजरी एंड रियली पुश्ड इट. बट वहाँ पर चीज़ें फिर बिल्कुल एक किस्म की स्लो डाउन हो गई थी, एंड आई आल्सो रियलाइज कि हाउ टफ इट इज टू वर्क विद द गवर्नमेंट. So just look at yourself. So you're like, AI, artificial intelligence, PhD, Cornell, and then government. You did actually fall for the trap. I did. No, it was a very attractive trap at a young age, right? I was like 28, 29 then, and it's like इस age के ऊपर having the advisorship thappa, right? Was a very attractive thing. Plus, but have you ever thought about had you not taken that step, had you stayed in the US, so where would you? I mean, I'm sure you do retrospectively. वो सिलिकॉन वैली वाले वो जो CEOs नहीं ट्रम्प के पीछे नजर आ रहे थे, शायद एक जगह पे आपको मैं भी नजर आ. I'm not surprised. I mean, I wouldn't be laughing because you have that personality. So, while you were talking, I was taking these notes as well.
Elon Musk does not know how to talk. ठीक है ना? You talk really well. ठीक है ना? Like, you're very kind because you're my friend. नहीं देखिए, I mean anybody who's looking at this, they know कि यार ठीक है. So categorizing you as a theta, ठीक है ना, तो गलत बात नहीं होगी, ठीक है कि हाँ यार थीटा है बंदा जो है पक्का काम करने वाला है, but बहुत कम थीटे होते हैं जिनको बात करनी आती है, they can articulate themselves, they can position themselves in a way कि हाँ यार they can present themselves. कितने PhDs हैं जिनको देख के अभी कह सकते हैं हाँ यार ये हैं, कितने CEOs हैं who can actually pull this off. And it's a strength. Yeah. And this is something again Mark Zuckerberg can't speak that word either. I want the viewers to take that thing as well. This strength is an important. So the question was, where did you learn all of this from? I was a debater. ये inspiration कहाँ से? I was a debater. 𝐿𝐴HISON. I think I have to give credit to 𝐿𝐴HISON too, because one of the skills that 𝐿𝐴HISON. So 𝐿𝐴HISON में दो चीजें बड़ी मैटर करती हैं. It's not just the studies. Studies में तो ठीक है, they evaluate कि O levels में अच्छे result आए, topper on and all. But I mentioned that I became the head boy of 𝐿𝐴HISON College. In simple terms, for others who may not understand the term, is the head prefect, the head of the student body, right? For that, they have to look at not just your academics. Academics have to be really good, but what sets you apart is not just that. You have to be you must be playing sports, right? You must be exceptionally good in some sports, or if you're not exceptionally good, you must be at least playing actively involved, right? I wouldn't say that I was. Critical reasoning basically comes from that. With debating, है ना? So debating की वजह से अगर आप ये कर सकते हैं, then you can hold this conversation, which is interesting as well, right? Yeah. Generally, people end up blabbing a lot, ठीक है ना? I mean, they have a lot of blurbs, कभी उसके बात करते हैं, but then logically एक चीज के बारे में बात करना, उसको articulate करके लोगों से connect और कम टाइम में करना, ये बड़ा important है, because it's not easy. Debates में फिर और बात होता है कि यार everyone can acquire that talent. It's just experience. तो मुझे बहुत early days के अंदर debating का experience मिला class 7-8 से, right? From recitation competition, from poetry competition to then debate, and not just within 𝐿𝐴HISON College. As part of the national competitions, we went to Risalpur, Bahawalpur, all across Pakistan, and participated, contested, won somewhere, lost somewhere. But overall क्या हुआ? आपको पता आ गया कि यार how do you articulate your whatever you have to say. I think so जिस तरह आपने बताया ये जो प्रेडिक्टिव मॉडल्स वगैरह ये बनते हैं जो भी उसके पीछे भी लॉजिक का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? और वो लॉजिक ऑन द फ्लाई ये डिबेटिंग एक्चुअली टीचेस यू दैट, राइट? यार हम भी एक कंस्ट्रक्टिव आपने एक आर्गुमेंट बनाना है जिसके पीछे निकाले कोई रीजन, कोई एक अच्छा जवाब निकलेगा. दिस इज वेरी बहुत फार ऑफ एग्जांपल है, बट यही चीज है जो कि चैट जीपीटी पे डाल है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है? इफ यू कैन आर्टिकुलेट और एक अच्छा प्रॉम्प्ट उसको बना के दे सके तो अच्छा जवाब निकालेगा. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि दुनिया में हम जिस दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, स्पेशली टेक और साइंस की बात कर रहे हैं, वहां पर कुछ भी जो है ना वो रैंडम नहीं है, एंड पीपल कंफ्यूज इट. Everything is very meticulously designed and planned, and there is some logic behind it. You can try to maybe say कि यार मैं इस लॉजिक को जल्दी से समझे बगैर मैंने कुछ चीज़ बना ली, मे बी 1 out of 10 टाइम्स आप बना भी लेंगे, ठीक है, पर 9 out of 10 टाइम्स आप फेल होंगे. सो व्हाट आई डू, एंड दैट्स माय प्रैक्टिस देयर, कि इफ आई स्टार्ट एनीथिंग, राइट, लेट्स से कि आई एम गोना राइट एन AI model or voice bot, right, which you know that I've done, right, unless I deeply understand how it is done, right, unless I deeply understand what it is, I'm not gonna get into it, because then that means that 1 out of 10 times तो मैं कर लूँगा, but 9 out of 10 times I'm gonna fall flat. So, and those are some of the things, even whether you're debating, whether you're learning anything, go take a deep dive into the subject matter, deep enough to understand it, but not deep enough कि जी आप PhD करने जा रहे हैं, because that's a 5-year journey, right? And you want to do things quickly there. But so this is fast forward. USF का CEO बन गया, USF के CEO की पोजीशन ओपन हुई. While I was the advisor, the then Prime Minister asked me कि you've done really well as the advisor, we want you to be the CEO. अच्छा, एक मजे की स्टोरी बताने लगा हूँ गवर्नमेंट की क्या मुश्किल होती है. So I was trying to really push 3G 4G option, right? The government then was towards the end of their tenure, और उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, बड़े स्कैंडल्स आए हुए थे, तो उधर का प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त, और सारे लोग बड़े डरे हुए थे कि यार पता नहीं हमारी गर्दन ना लटक जाए. तो इवन इंडिया में एक 2G का स्कैंडल हुआ था, और पता नहीं कितने 800 करोड़ और पता नहीं कितने का बना था, और कोई प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो थे ना मिनिस्टर इंडिया के, कोई राजा साहब थे, ठीक है, तो वो बेचारे फंस गए थे उसके अंदर. तो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर राजा साहब थे, तो एक दफ़ा मीटिंग में उन्होंने वैसी लाइट हार्टली कहा, भाई ये 3G 4G आप कह रहे हो, उधर का राजा फंस गया, मुझे भी ना मरवा देना आप लोग. बट
coming back, I tried to push these things, but things would not move. In fact, one of the IT secretaries called me to his office and he said, Basit, you are so young. Why are you in a hurry? मैंने कहा, I'm not in a hurry. I came here to make an impact. If I'm not making an impact, then why would I be there, right? You know, मुझे अमेरिका की आदत थी. अमेरिका में things happen fast. कहते देखो, मैं अगले साल या 6 महीने में रिटायर हो रहा हूँ, ठीक है? I wouldn't name that gentleman. वैसे अच्छे आदमी थे, बट वो कहते कि देखो मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है. मैंने कहा वो तो सर कहते क्यों? मैंने कहा क्यों, मैंने कभी कोई काम नहीं किया, ठीक है? कहता है, you know, I've given you the biggest office, enjoy and chill. ये क्या, छोड़ो ये चीजें होती रहेंगी. So इतना मुश्किल environment थी. बट जब मैं USF का CEO बना ना Owais, things changed because I had the executive authority. देखिए, I came with a very clean intention. So I was like, okay, let's do some work. Within those few months, 10 to 11 months as a CEO, we did projects in the far-flung areas of Pakistan. USF करता ये है कि वो all the telecom operators से 1.5% of the adjusted gross revenues लेते हैं, वो एक pool में डालते हैं और फिर वो project subsidize करते हैं कि पाकिस्तान के जो far-flung areas हैं, जैसा इंटीरियर सिंध हो गया, बलोचिस्तान हो गया, KPK, फाटा हो गया, जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, वो वहाँ पर कहते हैं कि जी हम आपके प्रोजेक्ट को सब्सिडाइज करेंगे. सो यही टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पैसे उनके पास वापस जाते हैं. लेट्स से कि मोबाइल लिंक ने एक प्रोजेक्ट करना है, उनको कॉस्ट आ रही है उधर 10 बिलियन रुपीस की, बट उसका बिजनेस मॉडल उनको सपोर्ट करते हैं कि यार 5 बिलियन की कॉस्ट हो, तो जो रिमेनिंग 5 बिलियन है दैट विल कम फ्रॉम USF. दे ऑल compete for those projects and then with the lowest bid and the best technical bid wins the project. So we did projects worth 10 to 20 billion rupees, far flung area. आज भी गवादर में जो इंटरनेट है, मोबाइल ब्रॉडबैंड है पंजगूर में, that is from the time that I implemented the project. So very fulfilling. And because you had the executive authority, so the lesson is कि if you put people in the government, give them the executive authority and they want to do it, they will deliver it. It's not like a government है. मसला होता है कि जब आपने उनको authority भी नहीं दी और एक red tapeism कर दिया. Then got into media, you'll be like, why and how? You know the story. Family had a business, had a license, a news network का. My father then asked me कि यार ये तुम्हारी सरकारी engagement खत्म हो रही है. I need somebody technical to help set up the channel. I was only supposed to help it up for 6 months. One of our partners pulled out while we were there starting, and the channel was about to start, and then I just got fully embroiled. So I'd been running it for a very, very long time. First, it's a very, very tough business. Log समझते हैं कि it's a very flashy thing, you know. Yes, it does get you the seat on the table, and you get certain influential people on your speed dial. Whether it's a really worthy thing, it's not. It's a tough business, very cutthroat, and news itself is not a very great क्या कहते हैं financial business model anyway. Right. So उसके बाद 2018 के अंदर ये 6 साल गुजर गए, पाकिस्तान आ गया, and I was totally out of tech. Too much to the extent कि मैंने 6 सालों से कोड को हाथ नहीं लगाया था, something that I used to love doing. And I was visiting US and I ended up going to Cornell campus. And when I went to Cornell campus, I met some of the professors there, some of the students there, then met some of my colleagues who now, for them I met, you know, some of them had flown from Silicon Valley because they've all been working at Google, Microsoft, Facebook, Amazon, like top tech companies. Cornell वाले सारे या किसी भी top university. जब उधर सबके साथ हुआ ना, I realized कि how much I miss tech. That 7-year-old Basit, right, who got his first Amiga 500 computer, that kind of came alive. And suddenly, you know, and I realized my wife, Gia was there, and Gia said, "Yaar, I've never seen you so enthralled and so excited." We'd been married for a year by then. In this time, and it seemed like something naturally that makes you happy is there. So why don't you consider it? So I made a plan then, yaar, I'm gonna venture back into tech, right? अब मैं 6 साल से out of tech था, and 6 साल in tech is a lifetime. If you've been out of that thing. Then ये 6 years in media is just brain draining. Absolutely. Tensions, No. pressure, वही उसने ये खबर नहीं चला सकते, वो नहीं कर सकते, आपको उठा, आपके उस बंदे को उठा लिया, ये हो गया, you know, all those things, ठीक है? And a lot of stories, but those are not relevant for this audience, ठीक है? So then the lesson that I want to share with others is that I decided I'm going to relearn
और learn new things, ठीक है. जो मैंने किया था वो अब 6 साल पुराना हो गया है. लोग समझते हैं आपने PhD कर ली तो then आपको learning की जरूरत नहीं है. That's wrong. You will need to learn every day in day out. Even Elon Musk, Warren Buffett, आज till date वो उनकी success का reason ये है कि they're up to date with whatever is happening. So तब deep learning नई चल रही थी, उठ रही थी, self driving cars, Waymo and all. तो computer vision का था. I was like, you know what? I'm gonna teach myself this thing. So started reading books, a lot of books. Started taking online courses. By 2020, I was fully up to date with what is happening, right? In AI, I could code back again, got a laptop, started coding, and then came an opportunity on a retinal eye AI startup in the Bay Area. Worked on some models for them. They had really good accuracy. Even that company raised money. But then, of course, COVID hit and that project didn't go through. But mujhe confidence aa gaya. What was your role in it? Designing the complete tech stack. Achha. Complete tech stack, making an AI computer vision model for detecting eye diseases from OCT images and all. 3D topographic images se aapne wo sara kuch kiya. More than that, for me it was like, yaar, what I've learned on my own is of value. And then it just started, right? I was like, okay, you know what? This journey cannot stop, right? So I made a plan that over the next few years, I'm going to keep learning until I get to a point where I can start doing it at a next level, right? COVID khatam hua, beech mein humne, my brother Hisham and I, it was like, everything slowed down, news ka business वैसे ही ठप हुआ था. Like, there is a problem. Pakistan में e-commerce boom कर रही है, but e-commerce has issues. That's where Insta World came to life, right? Insta World started at Insta Mall. पहले तो that conversation I'm going to have with Hisham probably. Yeah. So Hisham will focus on that. But what I started is that it took us 2 pivots. And 2 pivots led to Insta World. Or Insta World became this e-commerce logistics and financial services platform. जो के पिछले साल 500% year-on-year growth. Wow. While staying profitable. Wow. Net profitable, not cross profitable. That's that's a journey that Hisham would be very well suited to talk about it. But the lesson for that journey was that 2 things. The fundamentals of business are very, very same. If you need to stay, हमारे इर्द गिर्द ना companies millions of dollars raise कर रही थी, hundreds of million dollars, like the airlifts of the world, the bazaars of the world and all, right? बीच में हम होता था, हर बंदा हमसे पूछता था, यार आपने कितना raise किया? We didn't raise a lot of money because we didn't need a lot of money, right? We would question कि why are these people raising so much money, right? देखें मेरा, और this is the thing that आपके पास $100 का प्रोजेक्ट है और अगर वो $100 का प्रोडक्ट आप $50 में बेच रहे हो, सो वो $50 का जो डिफरेंस है ना, वो आपकी जेब से जा रहा है. और हो क्या रहा था, ये जितनी भी दूसरी कंपनीज हैं, ये वो $50 VC मनी के थ्रू यूज कर रहे थे, ठीक है. ग्रोथ नंबर्स तो बहुत थे. नेचुरली अगर मैं आईफोन जो है, लेट्स से 3 लाख का आईफोन है और मैं मार्केट में 1.5 लाख का बेचूंगा तो कितने लोग लेंगे? लाइनें नहीं लग जाएंगी, ठीक है. बट इज दैट द मोमेंट यू टेक दैट डील ऑफ, विल पीपल स्टिक? No, right? That was what was wrong with Airlift, right? That was what was wrong with so many of other startups, right? Their model was growth. Any growth which is built on just financing that thing through VC money, you're not offering anything new. Because that's what we took a slow down. I guess we खाली अब top line के ऊपर focus कर रहे हैं और profitability के ऊपर जो है आप सोच ही नहीं रहे. और unit economics पे आप सोच ही नहीं रहे. That's why they crashed. $200 million could not save them. Hundreds of million dollars to other startups. And whereas we raised less than $1 million. And we've been able to not only sustain, we now have almost like क्या कहते हैं 18,000 से 20,000 orders per day, ठीक है. We've done 500% year growth while being net profitable for a year without raising more than $1 million. Wow. So that is the journey that I was like, focus on unit economics. And I tell everything, there are only 2 equations that matter, and we'll talk about those equations down the line. So so this, and that's where comes the journey around 2022 and 23. Okay, I realized that I've been doing something in Pakistan, my media network business in Pakistan, my InstaWorld startup that's primarily focused in Pakistan. I also came to a conclusion, and I'm going to say it very openly here too. Some people may not like it. My view is that you can't trust the Pakistani currency, unfortunately.
we would love to trust the Pakistani currency. We all want the currency of Pakistan to be stronger. Yeah. But because of the horrendous choices and decisions some of our leaders or the political governments or the non-political forces have made in this country, our currency is bad and can't be trusted. That means if you're a hard-earning person, hard-working person, earning for your family, आप अगर 10% की भी ग्रोथ कर रहे हो सालाना या 15% की भी, तो आप कहोगे तो बड़ी अच्छी बात है, 15% में हर साल बढ़ रहा हूँ. बट बिकॉज योर करेंसी devalues roughly 15 to 20% every year, ठीक है, and this is a proven number, right? Net loss में आप तो सोचो आपकी उस मेहनत का या जो आपको वो जो बोनस मिला उसका क्या फायदा, you're in a net loss, right? So I decided कि यार you need to have a dollarized revenue. That's very, very important. Number two, the digital world that we live in, the Facebooks, LinkedIn of the world, उन्होंने बहुत enable कर दिया है. आप यहाँ पर बैठे और हमारे पाकिस्तानी बच्चे बच्चियाँ कर रहे हैं through Upwork, through TopTal and so many other websites. They are freelancers के through कर रहे हैं. So the opportunity was there. You just need to find out कि आपकी expertise क्या है, and then you'll be able to do that thing. And number two तो हो गया. The main point was that the world is going to have the biggest transformation. The greatest that we've seen. The last great transformation happened when internet came. The dot-com boom, 98, 99, 2000. The world before 2000 and the world after 2000 are very different. So I think it was around 2018 when we got connected as well, right? Thanks to our kids and our wives. And फिर उसके बाद जब मैं वापस आया, I think in 2020, that's where we started talking. You started talking about AI. Yes. Okay, and you were very passionate about it. यार उस टाइम पे ना ही buzzword था, अब तो खैर buzzword है ही नहीं, अब it's a reality. Everybody's talking about it. Talk me through that. What made you think हाँ यार AI जो है वो उस टाइम पे आप बात कर रहे थे जब किसी को भी नहीं पता था इसके बारे में? देखिए, to quickly through, I've always thought like, AI, even while I was at Aitchison, right? I remember in my early ages, I got access to... has had a really good impact. So एक Britannica की encyclopedia होती थी, उसके ऊपर I've heard about AI, right? और फिर जब आप sci-fi movies देखते थे ना, तो उसमें ये robotics and AI का सुन के आप fascinate होते थे. And I wrote an article. AI had 3 waves, right? एक 50s में wave आई, जब लोगों ने कहा कि 1950s में कि जी AI is gonna come and take over the world, right? Crashed because AI needs two, 3 things, right? It needs massive compute power, it needs massive data. तब ना data था ना compute power थी. फिर एक wave आई around 80s and 90s के अंदर के फिर लोगों ने कहा, this was a time जिसका मैंने आपको जिक्र किया ना कि mid 90s में मैंने HSM में कहा कि इसमें हर बंदा AI कर रहा है. तब आर्टिकल्स भी आते थे ब्रिटानिका के अंदर. And it's like यार ये जो है AI जो है अब बहुत ज़्यादा आगे जाके ब्रिटानिका नहीं ब्रिटानिया आई थिंक ब्रिटानिका ब्रिटानिया is another thing, right? So and that's when again it crashed because this is pre-internet. Compute तो आना शुरू हो गई थी, chips आना शुरू हो गए थे, but there was no data, right? What internet and social media did for AI was the best thing, right? Because it accumulated so much data. In fact, आप ये stats अक्सर आपके पास आते होंगे कि दुनिया का 99% डेटा ना पिछले साल में हुआ है compared to the rest of it, because जितना हम video calling, sharing and सारा कुछ करें. So that data became very, very important. And then by that time, the GPUs had become so powerful, the data centers had become very powerful. So it was only natural कि अब जो कोई models आएंगे ना, so AI would really take off. I graduated from Cornell in 2011 के end के अंदर, ठीक है. And Geoffrey Hinton's paper that started this whole AI thing, deep learning 2012 in the published hota, right? And it starts becoming mainstream. This is not even the transformer paper. वो 2015-16 में ना self-driving cars और bus शुरू हो जाती है. So I knew this was something which excited me. So there's 2 things. You have to be excited about it. And number 2, the world is adopting it, right? That trip to Cornell in 2018 told me a flavor कि यार this is happening. The world is going to change. Whether you like it or not, you have to be part of it. So that's why I think it's so important. I tell everyone, be in the right company, be at the right place at the right time. Because if you are there, you'll get a head start. So I was part of those discussions. My network was around that and I was at the right place, one of the top universities. And मुझे समझ आ गई कि यार ये AI का होने लगे, अभी से पढ़ना शुरू कर दो. So अगर इसके मैं थोड़ा सा bird's eye view, ठीक है, and उसके अंदर Aitchison
Aitchison से he went to the US. Yeah. ये US से फिर government से telcos से फिर media और फिर media से AI. Yeah. ठीक है. So you have a very very holistic view of how the international market works, how the local market works, how the governance works. ठीक है. Telcos who are a beast in Pakistan. ठीक है. I mean, one of the biggest industries, maybe not the largest. Yeah. उनके बगैर कुछ हो नहीं सकता. ठीक है. So they have the most data as well. So right now you're a powerhouse in yourself. Okay, when you're talking AI, when you're talking, nobody can really challenge you in terms of what you're saying. So what are we getting at? कभी खाली एक कोई think tank है वो खाली आपको उठा ले और फिर उसको चुप होके बैठ रहे. नहीं देखिए I believe in sharing knowledge. ठीक है. मैंने सिलिकॉन वैली के लोगों से एक चीज जो सीखी है ना वो और वहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट. इन पाकिस्तान ना हम लोग ना वी ट्राई टू कीप आवर कार्ड्स क्लोज टू आवर चेस्ट. उसको नहीं बताना वो मेरा आइडिया इतना बड़ा है. भाई आइडिया कोई वैल्यू नहीं है. right. जिस चीज़ की वैल्यू है वो है आपके एग्जीक्यूशन की. इनफैक्ट पिछले दिनों सैम ऑल्टमैन से किसी ने पूछा मेरा AI आइडिया है बट मैं शेयर नहीं करना चाहता. नहीं सेट कि आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है. और ये हमें माइंडसेट और ये द किड्स हु आर वाचिंग दिस थिंग हु वांट टू बी एंटरप्रेन्योर्स स्टॉप थिंकिंग कि जी आप एक दिन उठे ना आप आइडिया आपका आइडिया शायद बहुत अच्छा भी होगा और आप जाकर वो सैम ऑल्टमैन कहते हैं आप टिम को या मार्क ज़करबर्ग के टेबल पे आइडिया और उसकी पूरी एग्जीक्यूशन प्लान भी लिख देंगे और वो शायद बहुत बड़ा आइडिया भी होगा. दे आर सो बिजी डूइंग अदर थिंग्स दे माइट नॉट इवन लुक एट इट. सो प्लीज स्टॉप थिंकिंग कि योर आइडिया इज. सो व्हाट आई एम गेटिंग एट इज कि इस पूरी चीज करके अब आपने फोर लूप्स बना लिए. ठीक है. और फोर लूप के अंदर जो है वो सारा so you have all the data with you. ठीक है. And now not all the data. I have an idea where the data is right. And I have an idea where what I have a very good world view, right? Yeah. और अब मैं उस world view को something meaningful में translate कर रहा हूँ. And you have the connections to actually get that data as well. Yes, yes. I mean, that's a and while building those connections, yeah. Right? So मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि Owais for loops ke through, which I'm glad you mentioned it, like so it has two components. The AI consulting component which I'm actively doing since last 2.5 years, जिसमें मैंने US से enterprise clients को मैं consulting active generative AI की consulting दे रहा हूँ. One of the Fortune 50 companies, Johnson & Johnson, I'm consulting for them. Fitch Ratings, one of the largest ratings company जो कि global countries से लेकर big corporations की rating करती है. Empower ID, then Protect Software Solution, and a host of small medium businesses जिनको मैंने consulting provide की है. साथ मैं उनको development services भी देता हूँ. I have a team, small team but a good team. We consult for them, we develop solutions for them. But more than that, my idea was always to focus on AI product, right? Consulting or services is a very different model, right? So I'm going to ask you a very particular question about for loops या फिर इसके अंदर जो आप लोगों को जिनको लेके आते हैं. So obviously आप खुद नहीं चला सकते. ठीक है ना. आपने खुद कोडिंग करनी हो सब कुछ तो फिर फायदा नहीं. It's not scalable. It is not. You need some sort of a skill set. ठीक है जो आपके पास हो. What are those AI skill sets that you're looking for in people जो कि आपकी कंपनी को ज्वाइन करें या AI के अंदर जो है वो अभी काम करना चाहते हैं करें वो. So the point is कि right now दुनिया में शायद कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है. पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं जो कि अगर मैं कहूँ कि जो यूनिवर्सिटी से बच्चा निकल रहा है they're ready for the job at my company, right? Because AI and the tech that we're working really advanced tech, right? And वहाँ पर जो kind of skill set required है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जा रहा. Because every few months something new is coming up, right? When I started AI 2 to 3 years ago. How are you hiring then? So that's what I'm going to talk about it. Just going to give you an example. 2 to 3 years ago there was nothing called the agentic AI, right? Today, if you're not making agentic AI architectures, then you stand nowhere, right? हर यूनिवर्सिटी का जो 4 year डिग्री प्लान है वो पता नहीं कितना 10 साल पहले 5 साल पहले प्लान होता है. सो वो तो आप भूल जाए. सो द पॉइंट इज बट ये जो कंपनीज हैं जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं द बेस्ट थिंग फॉर अस एज पीपल टेकीज इन दिस एज इज कि आपको ये सारा नॉलेज फ्री मिल रहा है आजकल. द गूगल्स ऑफ द वर्ल्ड, द ओपन एआईज ऑफ द वर्ल्ड, द फेसबुक्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सब लोग चाहते हैं कि आप लोग और हम लोग इनका टूल किट्स यूज करें. ठीक है. सो इन्होंने एक नया मॉडल ऑफ एजुकेशन आया है. वो ये आया है कि द बिग कंपनीज वो अपने ही टूल किट्स के ऊपर अपने ही स्पेशलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम्स बनाते हैं और वो लर्निंग प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे deeplearning.ai coursera पे रख देते हैं. उससे उनको फ़ायदा क्या होता है? आप सोच रहे होते हैं यार इतनी मेहनत करके लोगों को फ्री दे रहे हैं, they can make $50
और $100 पर कोर्स ऑन दिस थिंग, दे थिंकिंग लॉन्ग टर्म। जितने लोग उनका इकोसिस्टम यूज करेंगे उतना उनके प्रोडक्ट जिससे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं वो होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अगर मेटा का लार्ज लैंग्वेज मॉडल या ओपन एआई के सीख लिए हैं तो मैं अपने तमाम कस्टमर्स को ओपन एआई की एपीआईज और ओपन एआई की मॉडल्स यूज करूंगा। सो उन्होंने also did this very well. Yeah. Microsoft वगैरह इस Yeah. सारे And Microsoft is the master of this, right? Yeah. So वो $50 जो उन्होंने मुझ पे इन्वेस्टमेंट की है, Yeah. is a very College small days, investment, ठीक है, and that's gonna make them like hundreds of millions of dollars, right? So the knowledge is out there. मैं ये कहता हूँ कि AI की एज के अंदर you have to understand, if you have time, right? I'm going to explain कि there are 6 or 7 layers which are very important. Sure. And it's going to be very important for everyone to understand कि उनके लिए opportunities क्या है, ठीक है? So let's start from a very, very basic layer. पहली layer है chip layer. This is where innovation is happening. हमारे यहाँ जो large language models हैं, जिसको हम AI models कह सकते हैं, वो इनहेरेंटली बहुत डिफरेंट हैं जो कि आपके पुराने सॉफ्टवेयर थे, जो आपके ERP सिस्टम्स थे, जो आपके वीडियो गेम्स के सिस्टम थे, उनकी कंप्यूट रिक्वायरमेंट्स बहुत डिफरेंट है। अभी तक एनवीडिया बहुत फ़ायदा तो उठा रहा है, एनवीडिया इज मेकिंग बिग मनी बेस्ड ऑन दैट, बट आई एम गोना से समथिंग रियली बोल्ड हियर दैट एनवीडिया चिप्स of the current time, I'm not talking about the future, right? We never know what they're going to do in the future, are not the most suited for AI. Though they're making the most money and their market cap has hit the roof or like skyrocketed, but they're not the best because they are most ideally suited for cryptocurrencies or maybe for graphics, for which the original purpose, right? So that means there's an opportunity, right? And that's where multiple startups have come in, Grok, Samba Nova, Cerebras System, जिनका एक ही मकसद है AI systems based chips बनाए, ठीक है? जो इन्वेस्ट करता स्टॉक्स के अंदर ये याद कर ले प्लीज। Yes, it is very important, and these companies will be acquired by big players very soon, right? And I'm actually using some of these models, right? Nice. So, वहाँ, so if you're a computer engineer, you want to focus on these areas, right? ये opportunities ज़्यादातर बाहर हैं. Chip design work in AI is basically happening there. So some innovation is going to happen there. Then there's a top layer, hardware. Hardware layer के अंदर क्या है कि यार interconnection between different chips, chip to chip transfer होगी data के लिए, उसके लिए बेहतर devices and all. तो वहाँ पर photonics आ रहे हैं, वहाँ पे innovation हो रही है. फिर आ जाता है cloud layer, right? अच्छा, hardware layer में भी innovations हो रही हैं. So if you're working on the hardware layer, you want to work on these things. फिर आ जाते हैं सबसे स्टेबल लेयर, वो क्लाउड लेयर. क्लाउड लेयर ये कि उसमें AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, ओरेकल भी आ गया है, गूगल है, वो स्टेबल है. आई डोंट सी मच चेंजेस देयर बिकॉज दीज आर सच बिग जायंट्स, राइट? आज खबर थी कि ओरेकल इन पार्टनरशिप विद ओपनएआई एंड सॉफ्टबैंक एंड माइक्रोसॉफ्ट सेटिंग अप $500 billion वर्थ ऑफ डेटा सेंटर्स. सो वो वहाँ पर कोई मैं ज़्यादा डिसरप्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. ये जो बिग प्लेयर्स हैं ना, ये उन्हीं की गैम्बल होगा, वो आपस में खेलते रहेंगे. फिर आ जाता है लेयर जो कि इंटरेस्ट हो सकता है हमारे लिए, पाकिस्तानीज़ के लिए, मॉडल लेयर. अब मॉडल लेयर में जो काम है ना, वो ज़्यादातर वो काम है जो या तो PhDs करेंगे, बिकॉज दीज आर पीपल हु हैव टू अंडरस्टैंड डीप डाउन के एक AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो हम बात कर रहे थे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स होते हैं, वो किस तरह करते हैं, उसको तैयार कैसे करना है. जो this is where the PhDs will make a mark. People who work coming out of like top universities like Stanford, Harvard, Cornell, MIT और यहाँ से भी, ठीक है, they will have an impact because they'll have a deeper understanding. And OpenAI का जो GPT मॉडल हम कहते हैं, generative pre-trained transformer मॉडल, जिसने वर्ल्ड बदल दी है पूरी दुनिया को, राइट? दिस होल जो कि लास्ट 2 years में सब कुछ है वो GPT मॉडल की वजह से हुआ. एंड इट्स बेस्ड ऑन 2018 का गूगल रिसर्च का पेपर. और वो जो 6 के 6 उसके ऑथर्स थे ना, उन सब ने बाद में स्टार्टअप्स उसी पे शुरू किया और सबके सब बिलियनर्स बन चुके हैं. आई थिंक कल मैं उसकी सुनने पे चाहिए इसी तरह की एक वीडियो देखा, जिसमें बता रहा था कि भाई अगर आप मेरे मॉडल्स को और माइक्रोसॉफ्ट से कंपेयर करेंगे तो उनके छापे हैं. हाँ, so because it all came out of that, right? It although Google should have made the most out of it, but they didn't, right? But ये सारे के सारे जो OpenAI में भी गए, वो सारे के सारे वहीं से शुरू है. But इस पे रिसर्च खत्म नहीं हुई. सो LLMs जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इनकी एक वेरिएशन आएगी जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स. देखिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर फॉर जेनेरिक टास्क. यार उसको मैथ भी आती हो, उसको साइंस भी आती हो, उसको उर्दू भी आती हो. बट अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, लेट्स से यू मेकिंग एप्लीकेशन ऑन ब्लॉकचेन, जस्ट थिंकिंग आउट, राइट, और डाउ प्रॉप्टेक के ऊपर,
does it really have to know every language? Yeah. Does it every have to know the physics? It doesn't, right? Right. So if you have a smaller model specialized for that, what does that mean? It would be way cheaper, it would be way faster, it would be more efficient. So what the modern layer पे बहुत काम होने, and that's where a future hundreds of billions of dollars worth of companies will be made. And इसके लिए लेकिन आपको you have to be at least I think masters PhD level का person to understand this thing, ठीक है? फिर आ जाती लेयर जो कि हम सब के लिए सबसे इंटरेस्टिंग हो सकती है, वो है एप्लीकेशन लेयर. इसमें you don't need to be a masters or PhD. You don't even need to be a computer science guy. Yeah. Application layer is जिस तरह हमने iPhone ने जब Apple Store शुरू किया था, तो Apple Store में लोगों ने apps बनाई थी. आपको एक ऐप चाहिए जो कि आपका कैलकुलेटर ऐप है, आपको एक ऐप चाहिए जो कि कोई वीडियो गेम की है, whatever it is. हर बंदे ने छोटी छोटी ऐप्स बनाई, उस पर उसने $50 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन की, and boom, they became really overnight successes and did well. इसी तरीके से अब इन AI मॉडल्स को लेकर जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं या स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे वो GPUs पे रन कर रहे हैं एनवीडिया के या ग्रॉक और उनके सिस्टम पे रन कर रहे हैं, यूर agnostics टू दैट. व्हाट यू गोना डू इज कि यू गोना क्रिएट एन एप्लीकेशन जो कि आपका काम करे. लेट्स से कि आप पॉडकास्ट करते हो और आप कहते हैं कि जैसे जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे वैसे इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट होती रही. ऑलरेडी ये एप्स आ चुकी हुई, ठीक है, बट व्हाट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि somebody would create an app and वो कहेगा यार अवैस मैं आपसे ट्रांसक्रिप्शन के हर घंटे महीने के मैं आपको अनलिमिटेड मिनट्स देता हूँ और मैं आपसे $20 पर चार्ज करूँगा. पहले माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं. वो $20 में चार्ज करूंगा. आप कहोगे यार ये ठीक है यार, $20 के अंदर मुझे ये सर्विस मिल रही है, and suddenly they will be targeting everyone. This is the application layer. Maybe उनको सारी चीजें कॉस्ट करने के 5 cents पड़ रहे होंगे, $1 पड़ रहा होगा, और वो $20 की आपको बेच रहे हैं, राइट? एप्लीकेशन लेयर में you don't need to be a PhD, you don't need to be a master. All you need to know is to be up to date on the AI stack. आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे एफिशिएंट मॉडल कौन सा है, दुनिया में सबसे बेहतरीन चिप कौन सी है, दुनिया में सबसे फास्ट इन्फ्रेंस कौन सी हो रही है, and you need to continuously keep yourself up to date. So who's going to win this race? People on the application layer need to have a holistic view of where the technology is headed. They need to be taking courses every month. Even they are the CEOs, they need to read and read and read, right? Because then what will happen is, क्योंकि AI में पुराने ज़माने में जो टेक होती थी ना, एक टेक कंपनी को तकरीबन अपनी टेक पे तकरीबन 1 साल का हेड स्टार्ट होता था. आज अपनी एक एप्लीकेशन बनाई ना, दूसरे को उसको कैचअप करने पे साल लग जाता था, 8 से 9 महीने लग जाते थे. AI में वो कैचअप टाइम जो है, जो हेड स्टार्ट है ना टाइम, वो 2 महीने में रिड्यूस हो गया है. लेट्स से मैंने एक नए मॉडल के ऊपर एक ऐप बनाई, लोगों ने कहा वाह वाह वाह, लोगों ने साइन अप करना शुरू हो दिया. कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा कि यार ये किया, इसने ये यूज़ किया होगा, उसे ट्राई किया, उसने 2 महीने में कैचअप कर लिया, राइट? नाउ उसने कैचअप कर लिया है, बट आपको भी तो 2 महीने मिले हैं ना. अगर आप उधर ही बैठ गए हो तो ही और शी में लीव यू बिहाइंड, फार बिहाइंड, राइट? बट आपने अपने आप को कॉन्स्टेंटली लर्न करते करते वो अपना 2 से 3 महीने का जब गैप आप मेंटेन करोगे बाय लर्निंग, योर एप्लीकेशन विल बी अ सक्सेस. सो एप्लीकेशन लेयर, जिस तरह हम वो टेक्सटाइल के बिजनेस में कहते हैं ना, लोग जो कॉटन उगा रहे होते हैं उनको बहुत कम रिटर्न मिलता है, फिर जो धागा होता है उसका एक रिटर्न होता है, एंड में जो द सैफायर्स और द जो वैल्यू ऐड करते हैं. So जो मैंने आपको 6 लेयर्स बताई ना, उसमें एप्लीकेशन लेयर इज वेयर मोस्ट ऑफ द मनी वुड बी. सो अगर पुराने हमारे मेरा जो बैकग्राउंड है वो डेटा सेंटर्स वेबसाइट भी, डेटा वेयरहाउसिंग वेबसाइट ज़्यादा, उसके ऊपर हम करते एक डेटाबेस लेयर होती थी, ठीक है, फिर उसके ऊपर एक बिजनेस लेयर, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर होती थी. सो आई एम अज्यूमिंग कि भी प्रेजेंटेशन लेयर को मैं अगर तशबीह दूं फ्रॉम एनी यूजर्स, तो हम लोग किसी भी लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर हम लोग कहते हैं यार ये मार्केटिंग के लिए जो है ये प्रेजेंटेशन लेयर है, दे कैन डू देयर ओन डैशबोर्डिंग ओवर हियर. ये जो है हम लोग उसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस वाले के लिए कर रहे हैं, ये बस सेल्स के लिए कर रहे हैं, सभी तो वो अपनी डैशबोर्डिंग करते थे. तो एसेंशियली व्हाट वी आर सेइंग इज कि वी हैव ऑल द टूल्स फॉर एनी बिजनेस ओनर कि आप आए, एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू प्लग एंड प्ले, आपको जो प्रॉम्प्ट्स देने हैं आप दें, जो भी आपने एप्लीकेशंस बनानी है बनाएं, और इसकी वजह से जो है you're not really lagging behind, right? कि भी अगर दुनिया के अंदर जो है एक टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई थी, वो अभी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं भी थी, तो अब ये कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ना भी पता हो, तो as long as you know कि बिजनेस में से निकालना क्या है, you will be able to do it. Yes, and in fact I'll go a step further and I'll tell people कि if you are a non-tech business, ठीक है,
आप पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी हैं, you're a non-tech business and you're not using AI, that you should ring alarm bells right now. You should start, like, if you're listening to this, please note that your days are numbered. Yeah. Non-tech business not using generative AI, your days are numbered. Please note this thing. And this is not what I'm just saying. Justin Huang, when he was in India, mentioned this thing when Akshay Kumar asking, okay, what is something that is AI is going to replace you, replace me. He said AI is going to replace those who don't use AI. Simple as that. So your days are numbered if you're not using it. And if you're a tech business and if your tech stack does not use the generative AI, or if your staff or your coders are not actively using Copilot and you're not developing using AI, you're not using AI in your solutions, your numbers are gone. One thing that's going to be an unfortunate outcome of AI, and which we need to talk as a nation, is that not just Pakistan, a lot of these low paying jobs, right? The call center operations, the, bilkul low end development work, those jobs are going to vanish. आपने बनाया है ना इसके ऊपर एक बॉट बनाया ना आपने? So I mean, bot लोगों को replace करने के लिए नहीं बनाया, but it's a very natural fit, right? So the way I look at it is आपकी efficiency बढ़ती है. Yes. मैं तो ये कह रहा हूँ. So मेरे से कोई इसी तरह बंदे ने एक बात की, उसने मुझे कहा कि यार ये जो आप बॉट अपने, so we are inculcating this in our system as well. कि ये हम लोग लगाने लगे, इसमें cold calls वगैरह भी होंगी और साथ में जो customer की queries हैं वो भी हमारे पास आ रही होंगी, वो handle हो रही होंगी. क्या इसी workforce के साथ I can address more people. Yes. ठीक है, that's what I'm trying to do. I'm not trying to say कि यार ये वाली चीज इसको replace कर देगी, but मेरे पास ये जो 5 resources हैं, अब इसको मुझे multiply करके 50 पे नहीं लेके जाना. ये मैं 5 से 7, 8 ये आशा से grow कर सकता हूँ, because many of the work जो FAQs वाला है या जो ऐसे tasks हैं जो कि bot देख सकता है, it's a very good example that you said. Like, देखें, अगर आपकी एक business application है DAO PropTech की, ठीक है, और आपके पास clients की queries आ रही है, right? Maybe you have hired 2 people to handle this thing. Let's say you're running a campaign and hundreds of people start reaching out to you, right? एक वक्त में तो 2 लोगों को कर सकते हैं. What if there is AI there? All 100 can be address at the same time. तो आपकी जो लीड क्वालिफिकेशन वो हो सकती है. लेट्स से एक बंदा रात को 1 बजे कॉल कर रहा है, एक बंदा सुबह फजर के वक्त कॉल कर रहा है. अब उस वक्त आपके बंदे, this is real life problem. This अब हमारे पास कॉलिंग की जो है एक सर्टेन टाइम होता है. आज ही मैं हशाम से बात कर रहा था कि one of the issues that sometimes we have is कि जी सेल्स वाला कहते हैं, वो क्लाइंट कहता है कि जी मैंने कॉल की, किसी ने फोन नहीं उठाया. अब सेल्स एजेंट का एक टाइम है कस्टमर सपोर्ट का, उसने उस टाइम पे की जब कोई भी अवेलेबल नहीं था. एंड कस्टमर इसका मूड खराब हो, और वो कस्टमर को पागल हुआ है भाई, उसे कह के यार, वो कहते हैं जी मुझे इंस्टेंट क्यों नहीं जवाब मिला. AI solves that instant problem, right? More than that, it's cheaper and it's scalable. So these are the things, like, you're not just selling them on cheap, right? AI is also cheaper, by the way. Yeah. But you're not just selling them cheap, you're also telling them, like the word that you use, efficiency. Yeah. If it's going to be more efficient, then how can you compete, right? So this is, what does that mean? That means कि the third world countries, especially, हम भी IT exports की बात कर रहे थे, हमारी बहुत ज़्यादा IT exports BPO के ऊपर है, call centers के ऊपर है, जो numbers हम, not really the IT work or software development, but एक है large component. It's gonna take a hit. Are we ready for it? So that's where I think we need to, that's a bigger sort of topic for discussion. Okay, are we ready for this thing? But we are launching that product in the coming week. Very excited, targeting the US clients. And इसका demo हो, अगर तो किसी ने देखना हो तो where can we go see it? I think you put it LinkedIn I put it on LinkedIn, but that was like 4 months ago, right? Yeah. 2 to 3 months ago. Now though, that model has really improved, and now it's not Is there just a new video coming out? Yes, there will be a new video coming out in you a can couple. sync that with the podcast release. Yeah, absolutely. Yeah. So I'll just in fact, that's a very good idea. Yeah. I'll share that video, and now it's just not a bot; it's a whole system. It's a software application where any business can plug in. They'll have a whole CRM. They'll see who called recordings, outbound call, end-to-end automated. Nice. A call comes in based on the customer requirement, gets the information, and let's say it needs to make a dispatch or outbound call. It's a doctor's clinic. Doctor is not going to receive every call, right? कोई appointment के लिए call कर रहा है, कोई किसी के लिए कर रहा है, but there could be an emergency. So the bot automatically figures out whether this call is a normal appointment seeking call. It will अपॉइंटमेंट बुक कर देगा, कोई बेसिक कोई ऑफिस का एड्रेस पूछ रहा है, वर्किंग आवर कर रहा है, वो कर देगा. लेट्स से समबडी कॉल्स इन कि मेरी टांग टूट गई है, मुझे अभी इमरजेंसी चाहिए. द बॉट विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन, देन इट विल मेक एन आउटबाउंड कॉल ऑटोमेटिकली टू द डॉक्टर कि हे, मुझे बासित ने कॉल की थी, देयर इन इमरजेंसी,
Can you help them? So end-to-end automation at any time of the day. ये तो फिर बड़ा एक sophisticated किस्म का वो है ना यूज केस। मेरे दिमाग में तो बड़ा सिंपल सा यूज केस आता है, मेडिकल बिलिंग वाला। मेडिकल बिलिंग जो है एक पूरी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में चला रही है, that's under threat when you talk about this. ये तो मेडिकल कंपनीज जो हैं, जो बिलिंग वाली कंपनीज हैं, they need to inculcate this absolutely right now. And what I would say is they need to, so humans will not be fully replaced and they can never be fully replaced. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इनको प्रॉब्लम होगा, ये भी एफिशिएंसी के साथ शायद 10 डॉक्टर और हायर कर सकते हैं। Yes, that's what I'm trying to say, right? So I think you have put it so well कि हम लोग हमेशा नेगेटिविटी के बजाय, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि हम नेगेटिव एनर्जी इतनी कंज्यूम करते हैं कि if I were in their position I would frame it differently कि यार अभी मैं 10 क्लाइंट्स को सर्व कर सकता हूँ इस वर्कफोर्स के साथ, अब मैं मे बी इसी वर्कफोर्स के साथ मैं 100 क्लाइंट्स को कर सकता हूँ, and that changes the whole equation, and that's what we need to focus on. So we've talked last segment है, I think थोड़ा इसको क्लोज भी करते हैं। एक मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है और आपका इतना नहीं है, ठीक है, that's cryptocurrency, ठीक है ना, blockchain. I know last year I think you went to Nathing Gully और वहाँ पे आप उसका लेके गए सतोशी का white paper, वहाँ बैठ के आपको पढ़ा, अभी भी नहीं पसंद आया। No, in fact, I have to give you credit. I've been talking to you about Bitcoin. You know, there are few friends that I need to give credit, and I can count them on this finger, right? So less than 4 or 5, right? Who been always telling me this thing. I did not believe it in crypto for a very long time, and it was only until like 6-7 months ago where I became a convert. My fundamental understanding of crypto was flawed, right? I was seeing it as a replacement of fiat, right? I think it works alongside fiat, and once you understand it and you see it's a digital asset, right? And we have so many sort of assets, gold, one kind of an asset, then this whole model starts making sense, right? And then my whole understanding of Pakistani currency and the global inflation hit all the currencies, it came together, it makes perfect sense. And I think Bitcoin, क्योंकि देखिए मैं the way I look at it ना, जिस तरह आपने बड़ा अच्छा उसको एक्सप्लेन किया कि यार जब मैंने AI के अंदर गया तो मैं उसके रूट में गया, ठीक है, मैंने आपने वो 7 लेयर्स समझाई हैं, ठीक है ना, 6-7 लेयर्स गया, इसकी बिजनेस लेयर अलग है, इसकी हार्डवेयर लेयर है, चिप है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। क्रिप्टो के अंदर भी मीम कॉइंस के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बिटकॉइन के ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं है, just understand the fundamentals. I was having a conversation with Faisal on this. Oh, he's a guru. He's a guru. He's been one of the earliest movers into this thing. Why? वो तो उसके अंदर घुस गया ना, इसलिए क्या fundamentals of money को समझो, ठीक है, फिर उसके बाद देखो कि ये क्या चीज रिप्लेस करी है, देखिए it's not fiat, it's not a currency, it's a store of wealth. Yes. जो store of wealth है उसको किस तरह आपने perceive करना है। In fact, फैसल के घर में वो अली मदब जी आए हुए थे, that's when like it really started clicking with me कि यार this is what it is, and you have been working and crypto one and blockchain itself. I think these are two transformative technologies of our era. And मैं अवैस एक चीज और भी कहना चाहूँगा कि the next 5 to 10 years are surely going to belong to these two technologies. AI and crypto or blockchain backed tokenization technology. But मैं एक चीज जो इसमें ऐड करना चाहता ना, उसके बाद भी एक और चीज आने लगी है जो कि इतनी पावरफुल है, which is going to completely ये हम जो AI को समझ रहे हैं ना, हम भूल जाएंगे, that's quantum computing, right? By आपने अभी जो NVIDIA ने इतना सब निकाला है अपना यार, नहीं अभी जो इन्होंने अभी गूगल ने किया है, गूगल ने क्वांटम के कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स रन किए ना, which breaks the thing. Of course it's not stable and it's not ready for mass utilization, but early, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं टाइमलाइन इस पे डाल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि बाय द टाइम हम AI को पूरी तरीके से हार्नेस कर लेंगे ना अगले 5 से 10 सालों में, और AI की कंप्यूट की रिक्वायरमेंट और भी इनॉर्मस हो जाएगी, that's when quantum will be ready. You know, in 2035 we'll be sitting here and discussing how quantum is going to remarkably change the world. See, humans are only looking at Earth right now. कल वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अनाउंस कर दिया था ना कि जी हम मार्स पे जाने लगे, राइट? मार्स में सबसे पहले ह्यूमंस नहीं जाएंगे, ह्यूमनॉइड्स जाएंगे, राइट? एंड दे विल बी मेबी थाउजेंड्स मिलियंस एंड रोबोटिक्स विल नीड, and us environment में the kind of compute power they will require and all that stuff, that's where AI will be going to be very important. That's where a lot of these host of new technologies are going to be very important, and eventually once you start terraforming a planet, quantum computing and all that stuff will be extremely relevant, because आप पूरे planet scale के ऊपर climate monitoring, wind patterns सब कुछ आपने track करना होगा. Right. So
आपका एक तो मीडिया के साथ ताल्लुक रहा है और साथ में you do come with a lot of authority on AI, right? And are you working on some policy level काम यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ या नहीं? नहीं मैंने बिल्कुल वो नहीं। नहीं मैंने या गवर्नमेंट उनको के भी समझ नहीं है कि यार ये मतलब I am like very active on LinkedIn on AI and all. उसके through some of these big agencies in Pakistan, the World Banks and the FCDOs and the GIZ, sometimes उनके साथ मिलके we are doing some awareness things. अभी आने वाले दिनों में Senate of Pakistan के अंदर I am going to be running an AI workshop, and that's going to be my sort of contribution to help the senators understand what AI is, right? देखो हम लोग, because you are a techie, I'm a techie, हम लोग जब बात कर रहे होते हैं ना, हमें लगता है कि यार हर बंदा understand कर रहा है, and maybe one of the mistakes that I've made here too, or my brother Hasham pointed out कि यार since you understand it, you feel कि everybody understand it, but maybe that's not the case. You have to really dumb it down for people कि what AI is. And yeah, if I have to really make people understand what AI is, what I'll tell them is कि यार AI is ये कि जो आप एक manual laborious work करते हो, something which requires you effort day in day out. For example, आप एक जॉब पे काम कर रहे हो और आपका काम है एक एक्सेल की शीट खोलना, उसमें से एक नंबर देखना, फिर उस पर से एक कैलकुलेशन करना, फिर उसका ग्राफ बनाना और उसकी ईमेल जनरेट करना. आपने कोई 6-7 स्टेप्स किए हैं और उसके बाद आपने किए और डे इन डे आउट आप यही काम कर रहे हो. AI which stands for artificial intelligence, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को ऑगमेंट ये करती है कि ये जो सारे टास्क हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हैं, स्टेप वाइज हैं, रैंडम नहीं है. इन सारे काम को AI आपसे बेहतर कर सकती है बिकॉज वो आपसे ज़्यादा तेज है. और इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं क्या है, जब हम बचपन में होते थे, सुप्रीम कोर्ट होगा उससे भी मैं एक बड़ा बेसिक एग्जांपल देने लगा हूँ, ठीक है. जब और लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए वाई AI इज इंपॉर्टेंट. जब आप छोटे हम होते थे, ठीक है, जब हमारे पास कैलकुलेटर्स नहीं होते थे तो हम मैथ करते थे, हाथ से करते थे ना. आपने मल्टीप्लिकेशन करने में कितना टाइम लगता था, ठीक है. अब कैलकुलेटर आ गए तो कैलकुलेटर वो काम कितना आसान कर देता है. उसके बाद एक्सेल शीट आ गई. सोचे एक बंदा कहे कि नहीं मैंने तो यूज़ नहीं करना, मैं तो हाथ से करूँगा, तो सोचे वो जब एक स्प्रेडशीट का काम हाथ से कर रहा है, खाता लिख रहा है, उसको कितना टाइम लगेगा. कंप्यूटर has made it very easy, right? बट कंप्यूटर में भी उस एक्सेल को ऑपरेट करने के लिए आपको एक्सेल का स्किल चाहिए. AI ने चीज़ वो और आसान कर दी है. वो कहता है यार आपको ना एक्सेल का आना चाहिए, आपको अंग्रेजी उर्दू या कोई ज़बान आए और आप उसको कह दो भाई मेरे लिए ग्राफ बनाना, वो आपको लिए बना देगा. ये देखना ठीक है. मैं I'm still stuck at सुप्रीम कोर्ट या केसेस वगैरह. जब आपके पास केसेस सामने लगे हुए होते हैं तो आपने उनको कैटेगराइज भी करना है, कैटेगराइज करके उनको प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटाइज करके ये भी देखना है कि कौन से इकट्ठे हो सकते हैं. ये कहीं पता नहीं कोई लॉ होगा क्योंकि एक ही को अलग अलग करके देखना, बट आई एम श्योर यू कैन क्लब. सो अभी जो हमारे सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना भी था बट वो नहीं बने, बट वो अलग डिबेट है. बट ही वाज वर्किंग विद सम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस who wanted to क्या कहते हैं रिफॉर्म पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम. जो एग्जैक्टली आप कह रहे हैं कि हर जज की एक स्पेशलिटी है, उसका एक बैकग्राउंड है, उसको उसके बेस पे केस असाइनमेंट हो, केसेस की ऑटोमेटिकली मॉनिटरिंग हो, आर्बिट्रेशन का सिस्टम आ जाए. पाकिस्तान में तो ट्रैकिंग नहीं होती, 10-10 साल केस लगे रहते हैं. वो ऑटोमेटिक सिस्टम अलाउंस करे, जजमेंट्स को एवेल्युएट करे. लेट्स से कि एक जज ने लिख दी और आप चीफ जस्टिस और आप देखना चाहते हैं आपके नीचे जितने भी जूनियर कोर्ट्स हैं उधर जो जजमेंट लिखी जा रही हैं वो किसी कोर्ट की प्रेसिडेंट से काम कर रही है कि नहीं. अब आपको इन एन आइडियल वर्ल्ड आपको ह्यूमंस को बिठाना पड़ेगा, भाई कोई काबिल लॉयर्स लाओ वो पढ़े, बहुत लेबोरियस वर्क है. All this can be done in seconds by AI, and he was working on this thing. Unfortunately, अब सारा कुछ politically change हो गया, and everybody was thinking if he becomes the chief justice, things would be really, really different. He's a very, very forward thinking man, but यही होता है हमारे यहाँ की चीज़ें ऑफ ट्रैक होती है. बट AI in every space is a remarkable opportunity. Like I said कि अगर if you are a non-tech company and you're not using AI, your days are numbered. So you should know this thing. Sir, it's been lovely to have you over. I don't think एक घंटा would do any justice to the kind of information that you have, the kind of knowledge that you can impart. We're definitely going to have another session with you. Would love to. No, I really enjoyed this thing. But, I really enjoyed it. You're actually a guru in AI or something. I love the way you know बड़े आसानी से अल्फाज को एक्सप्लेन कर देते हैं ना एक चीज को. ये बड़ा एक आर्ट है, ये हर किसी के पास नहीं होता. Thank you. But thank you so much for being on my podcast. Thank and we'll see you again. Pleasure is all mine. Thank you.